It's required more theoretical concept to understand STP. You required more theoretical concept. Configuration is less here. Mainly no configuration is there. Totally the conceptual. This is totally conceptual. Like VTP, we did some configurations. We make client server. We make some switch to server. We make some switch to VTP client, transparent client, transparent switches. Those things are there, but here nothing that much about configurations. This is conceptual totally. So STP stand for spanning tree protocol. Spanning tree protocol. As the name suggests to you, that means this protocol have some working principle like spanning tree. So it's actually work as a spanning tree algorithm. This protocol, this network protocol, principle is to follow the spanning tree algorithm. As the name suggests, it's a spanning tree protocol, so it's actually follow the spanning tree algorithm. I hope you are much aware about spanning tree algorithm. So, why this required? STP protocol is required. Mainly, this is for in a network. In a network, it required for loop prevention. Loop prevention. It's required for loop prevention. As the name suggests, this is a spanning tree. That means there a tree. If you see a tree structure, this is a tree structures. Tree structure, right? That's tree structure. There is no loop. There is no loop. If in between there is a loop, then this is not a tree. This is not a tree. So in the tree, there should not be any loop. So spanning tree protocol is required to make the loop omit from the network. So loop prevention, it's required to omit loop from a network. So a network can have loop. A network can have many loops. So spanning tree protocol, what it does, it prevent, if there is any loop, it prevents the loop. Or if there is any loop, it omit the loop. So loop prevention or omit the loop is similar. So it should be tree-like structure. Spanning tree protocols say the network should be tree-like structure, not a loop-oriented structures. So before understanding spanning tree protocol, let's what is that? I'm giving a scenario. Let's understand that. I have a switch. Let's say I have a switch. I have another switch 2. Now, switch 1 is connected with switch 2 with one connection A, and there is another connection. Let's say switch 1 to switch 2, connection B. So I have connected switch 1 to switch 2 with two wires, two crossover wires. Let's say this is a crossover wires in Cisco packet present. So two connection is there. Now there is a computer. Let's say there are many multiple computers sitting connected with switch 1.
multiple computers sitting connected to switch 2, also switched. Understand this. Suppose this is the network, this is also another network. There can be many other networks connected to switch 2. This is another network. This is also another network, let's say connected with switch 1. Multiple network can be possible that is connected. Now let's understand this. Let's understand this is computer PC1. Let's understand this is PC1. PC1 send a broadcast message. PC1 send a broadcast message to switch 1. Now PC1 जिस नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया है, सोच लो वो नेटवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता है. लेट्स से देयर इज ए message came 100.10. A broadcast message 10. Okay, 1 minute. Let's say the message came. So the broadcast message ID IP is 190.255.255.255. Oh, sorry, it should be, it's a class C. So 192.10.10.2. Okay, so let's understand a message, broadcast message came with the IP this. Now these IP, this network 192, so ये class C है. So ये network 192.10.10.0. This is the network ID. If this is the broadcast message IP, broadcast IP, directed IP, then this is the network 192.10.10.0. I will not tell you how I got the network. This is I have repeated many times. So if the network of these is this is the network ID and the broadcast IP is this, let's understand this network is not exist. Suppose in the internet there is no network with this IP. Now switch on got the message and see this is the broadcast. This is the broadcast message and this is the network ID. So it's sent to switch 2. It's sent to switch 2. Now switch 2 got the message, but it see this is a broadcast message and the network, he don't know is the network exist or not. What he do, he again broadcast to all the connections. So it's also sent to the interface B. So it received from interface A, it's sent from the interface B. So again switch on will get the message. Then switch on again, it's a broadcast message and it's sent again to switch 2. Then switch to got and see it's a broadcast message, it's sent to again to switch on. So this thing again and again, same within the same loop, the packet are traversing. So this is the problem. If you have loop, this is a loop. The packet may reside in the loop for a long time. So the scenario is switch on sending a message to switch to, a broadcast message, switch to again sending to switch on, then switch on again sending to switch to. If there is a loop, this will happen. Why? Because there are two interface now. Switch on से switch to में दो interface. Switch बहुत intelligent है.
जो इंटरफेस से मैसेज आता है उस इंटरफेस में वापस नहीं भेजता है, वॉट एवर दैट इज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज और वॉट एवर, उस इंटरफेस में मैसेज वापस नहीं भेजता है, दूसरा इंटरफेस में भेजेगा। अगेन स्विच ऑन जो मैसेज बी से आया है उस इंटरफेस में वापस नहीं भेजेगा, भेजेगा दूसरा से ए से। सो अगर ए से भेजे और बी से भेजे, पहुंच रहा है तो स्विच टू में, स्विच टू में अगर ए से मिला और बी से भेजे तो स्विच ऑन में the message is receiving. So this message is actually residing in the loop for the long time. It's sending switch on to switch to again sending to switch on, and this is happening. This will make collisions, network will be slow for this. Network will be slow. No other device can send the data that time. No other device can send data. So if there is a loop, the network will be slow. No other device can send the data that time. So that is the problem if there is a loop. So STP protocol work as loop prevention. So here came STP protocol. If STP protocol is not there, then this scenario will be occurred. Switch on will be sent to switch to will be sent to switch on, and that will be repeated. So STP प्रोटोकॉल इनबिल्ट हर एक स्विच में इंस्टॉल रहेगा, इनबिल्ट हर एक स्विच में कॉन्फ़िगर रहता है। तो हमारा जो सिस्को पैकेट ट्रेजर में स्विचेस है, इनबिल्ट एसटीपी प्रोटोकॉल उसमें कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी. So that's why if there is a loop in your configuration, then STP protocol prevent that loop. Automatically configure है, तुमको configure करने का जरूरत नहीं है. But you have to understand the logic, how the STP protocol is working in the switches. Let's say I have a switch 1, switch 2, switch 3, switch 3. All are connected. All are connected. Now, a packet broadcast message came. Switch on send to switch 2, switch to send to switch 3, switch 3 send to switch on again, then switch on send to again switch 2, switch to again send to switch 3, switch 3 again to send to switch 1. And these will continue. This is also another loop occurring. This is also a loop. So a packet trap into a loop. Trap into it. If this scenario happens, your network will be slow. No other devices which are connected to switch cannot send data. Packet collision will be occur, network will be slow. Packet collision will be occur. Packet collision. Then bandwidth will be slow of the network. Many things will happen. So to prevent that, we have STP protocol. STP, that is inbuilt in your all the switches, already configure STP. So how the STP work, that I have to see now. Is this clear how the loop occur and why we require STP? Is it clear? Can somebody respond me? Is it clear that how the loop is occurring in the network and why the packet is traveling to the loop and why we require STP? STP to prevent the loop. Now I will show you the how the STP is working. That is a different thing. But our main motive is why it's पर ये जो लूप बन रहा है बस इसी कारण से बन रहा है क्योंकि वो जिस एड्रेस पे भेजना चाह रहा था वो एग्जिस्ट नहीं करता है. नहीं, ऐसा नहीं है. वो शायद ऐसे भी हो सकता है कि
इस नेटवर्क में वो एड्रेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, उस नेटवर्क जो नेटवर्क में भेजना चाह रहे हैं, लेट्स से सोर्स होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट में भेजना चाह रहे हैं, सोच लो इस ये जो नेटवर्क बना है, लेट्स से दिस इज ए नेटवर्क, ये नेटवर्क में वो एड्रेस नहीं है और वो कनेक्टेड भी नहीं है उस एड्रेस के साथ, ये नेटवर्क उस एड्रेस के साथ कनेक्टेड भी नहीं है, तब लूप बनेगा। और स्विच मेनली ब्रॉडकास्ट करते हैं मैसेज, अगर लूप रहता है तो वो ब्रॉडकास्ट स्विच या ब्रीच दिस इज नॉट ओनली फॉर स्विच, दिस इज आल्सो फॉर breach. So this protocol STP is for layer 2 protocol. Layer 2 protocol means जो डिवाइस डेटा लिंक लेयर है उस डिवाइस में STP काम करेगा, it's a layer 2 protocol. So layer 2 protocol means it's a data link layer protocols. So जो डिवाइस डेटा लिंक लेयर है, लाइक स्विच में डेटा लिंक लेयर है, स्विच में है, ब्रिज में है, so all will follow the STP. राउटर में है, all will follow the STP. So if STP is not there, then there could be minor conditions, not the loop why I said that, I give that scenario कि broadcast message के लिए हो रहा है, it's not like broadcast message, every other message के लिए भी हो सकता है कि एक दूसरे को भेजते ही रह रहे हैं। जो सोच लो एक आईपी और मैक एड्रेस है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, या वो आईपी या मैक एड्रेस इस नेटवर्क के अंतर नहीं है, इस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, और ये नेटवर्क और किसी के साथ कनेक्टेड भी नहीं है कि दूसरे को भेजे, तो उस टाइम में भी लूप में वो पैकेट ट्रेवल करेगा। So this is just a scenario. It can be many other cases also when there will be loop will occur. Okay, so STP will be work when there is a loop. The loop you can easily see visible, like this is a loop. Switch on to switch 2, switch 2 to switch 3. This is a connection made. This is a loop. Then again, अगर ऐसे connection बनता, that is also a loop. Switch on to switch 2. Then switch 3, switch 4. So if you make the connection like that, स्विच ऑन के साथ स्विच 2 कनेक्टेड है, स्विच 2 के साथ स्विच 4 कनेक्टेड है, स्विच 4 के साथ स्विच 3 कनेक्टेड है, स्विच 3 के साथ स्विच ऑन कनेक्टेड है, दिस इज आल्सो अ लूप। सो दिस लूप इज विजिबल ना। सो ये एनी ब्लॉक या सर वो जो आप बोले कि स्विच जो है मतलब जिस लाइन से रिसीव करता है उस लाइन के अलावा बाकी सब पे भेज देता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो स्विच 1 स्विच 2 से ये मैसेज स्विच ऑन में आया, लेट्स से, देन स्विच 1 स्विच 2 के वापस नहीं भेजेगा, वो भेजेगा स्विच 3 को, क्योंकि इस लिंक से आया है तो इस लिंक में वापस नहीं भेजेगा, भेजेगा स्विच 3 को। देन स्विच 3 को इस लिंक से आया है, इस इंटरफेस से मैसेज आया है, तो ये इस इंटरफेस में वापस मैसेज नहीं भेजेगा, ये भेजेगा स्विच 4 को। देन स्विच 4 जो इंटरफेस से आया है, ये इस इंटरफेस से मैसेज आया है, it will not again send to the message to switch 3, it will send to switch 2. Sir, if And there switch, would be more switches or the network connected from switch 4, then switch would also forward the packet to them also. sorry, repeat again. सर अगर स्विच 4 से मतलब स्विच 3 से जैसे Switch पैकेट रिसीव हुआ, switch 4 से स्विच 4 में पैकेट रिसीव हुआ स्विच 3 से सर, तो हुआ, अभी के सिनेरियो के मुताबिक स्विच 2 कनेक्टेड है उससे, अगर स्विच तो 4 से स्विच 2 और का भी भेजेगा, हाँ तो और भी कनेक्टेड होगा, तो लेट्स से स्विच 4 से और एक कनेक्टेड है स्विच 5, उस पे भेजेगा तो उसमें भी भेजेगा, अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज है, अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज है तभी भेजेगा। नहीं तो फिर वो जो एंड
करके स्विच करता है, फिर वो होगा क्या नेट आईडी के साथ? अब इसमें भेजेगा और जो भी जिसमें भी भेजेगा, बट इफ देयर इज a loop, then there is a chance the packet will be visit in this loop. So to prevent that, we have STP. Loop अगर है, loop you can easily detect, like there is a cycle that is called loop. Here it is a cycle. Switch on to switch to switch to switch to, then switch on again, coming back to switch on. This is a loop. Switch on to switch 3, then switch 4, then switch 2, then again coming to switch on the connection. That is a loop. If there is a multiple other switches is also present, but if there is a one loop, then there is a loop, I will say. So that for that STP is required, and STP is automatically configured in your switches. You need not to configure the STP. STP कॉन्फ़िगर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। STP सिस्को पैकेट ट्रेजर का जो स्विचेस है, सिस्को का जो स्विचेस है, उसमें इनबिल्ट STP रहता है, STP कॉन्फ़िगर्ड होता है। So in this case, in this STP, understanding the STP, we does not have that much configuration. We just have the theoretical concept. Okay. Now, how the STP work, that means what it will do. तो क्या होता है, STP क्या करता है? So my previous example, let's go back to my previous example. Switch 1 to switch 2, and there is a switch 3. These are connected. These are connected. Let's say these are connected. So here is a loop occurring. Now STP protocol क्या करता है? What STP do? एक लिंक को ब्लॉक कर देता है, एक लिंक को ब्लॉक कर देता है। अगर एक लिंक ब्लॉक कर देगा, अगर लेट्स से दिस इज ब्लॉक्ड, दिस लिंक इज ब्लॉक्ड, दिस लिंक इज ब्लॉक्ड, देन स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 ऐसे बन जाएगा। सो इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो दिस इज डन बाय द एसटीपी। तुम लिंक established किए हो सिस्को पैकेट ट्रेजर में, लेट्स से दिस लिंक यू हैव established, बट एसटीपी इनबिल्ट रहता है। सो वो क्या करेगा, ये लिंक को ब्लॉक कर देगा, कोई भी एक लिंक को ब्लॉक कर देगा। तो कैसे करेगा वो ही हम लोगों को देखना है, एंड कौन सा लिंक को ब्लॉक करेगा, दैट आई हैव टू सी। सो if this link block, then there is no connection between switch 2 and switch 3. So the connection will be become like this. Logically, it will become like this. So if switch 2 want to send a data to switch 3, it will go from the switch 1. Switch 2 will first go to switch 1, then switch 1 to switch 3. Switch 3, if you want to send the data to switch 2, the packet will be traversed through the switch 1. कनेक्शन स्टिल स्टैब्लिश्ड है हर एक स्विच के बीच, बट एक लिंक ब्लॉक हो जाएगा, लूप का एक लिंक ब्लॉक हो जाएगा। सो नाउ देयर इज नो लूप एक्चुअली। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द एसटीपी। एसटीपी ब्लॉक अ लिंक टू मेक इट एज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अगर कोई लूप है तो एक और दो लिंक को ब्लॉक करके उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर देता है। दैट्स द वर्किंग ऑफ द एसटीपी। So spanning tree protocol. So it's make a tree, spanning tree. If there is a loop, this spanning tree protocol make spanning tree from the network. Logically, it's made by blocking some links. How it do it? By blocking some link. Now let's understand some point. So if I write STP
primary objective is to prevent what its objective is to prevent network loops. So what is the primary objective of the STP? Its primary objective is to prevent network loops on layer 2 devices by monitoring the network to track all links and shut down or block the redundant links जो लिंक का जरूरत नहीं है, जिसके बिना भी काम चल सकता है, उसको रिडंडेंट लिंक्स कहते हैं. उस लिंक को ब्लॉक कर देता है by tracking and monitoring all the links and shut down and block a particular redundant links. That is the work of STP. So STP primary objective is to prevent network loops on layer 2 devices by monitoring the network and track all links and shut down or block the redundant links. That is the work of STP. Is it clear? So this is the theoretical definition of the STP. Now हमें कुछ काम करना है. How the STP works. To understand that, we have to understand many terminologies. Please, let's go one by one. We have to now understand many terminologies to understand the STP working principle. So we'll see now some terminologies, STP terminologies. STP terminologies. Okay. पहला एक टर्मिनोलॉजी है रूट ब्रिज. So what is that? कोई भी एक कनेक्शन में अगर लूप होगा, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, कोई भी कनेक्शन में अगर एक लूप होगा, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3 में एक लूप है. अगर लूप होगा तो STP make one of them switches as root of the tree, one of them as root. स्विच 1 को भी रूट कर सकता है, स्विच 3 को भी रूट कर सकता है, स्विच 2 को भी रूट कर सकता है. That is depend on STP working principle. किसको रूट बनाएगा? That I will talk about later. How to make a root. But कोई भी एक रूट होता है. That's called root bridge in a STP connections. In a network, if there is a loop,
STP make one of them switches as a root. That one is a root bridge. STP ensure only STP ensure only one path to root from all other switches. From all other switches. So any of them will be root, and STP ensure also only one path to root from all other switches. What does that mean? Let's say this is the root. Let's say this is the root. So these are the non-root. These are the non-root switches. So non-root switches. अगर एक को root बना दिया तो दूसरे को कहते हैं non-root. So STP ensures only one path to root from all other switches. तो all other जो non-root switches है उससे एक ही path ensure होता है. तो switch 2 से root switch on is the root. एक path है. Switch 3 से switch on और एक path. Only one path. It cannot have multiple paths. Switch 3 से switch on में और एक path है. It's not that. Switch 2 से switch on और एक path है, नहीं होगा. जैसे switch 2 से switch on में ये एक path है, this is the A path. There is another path, B to C. So it will not allow. It will not allow. So B will be now omitted if there is multiple path. So STP ensure only one path to root from all other switches. That is the working of the STP. So एक को root बनाया, दूसरे सारे को non-root. And non-root से switch तक एक ही path होना चाहिए. Non-root switches से switch तक एक ही path होना चाहिए. Switch 2 से switch on में एक ही path होगा, A. It should not be have switch 2 से switch 3 and then switch 3 से switch on. So it will omit one of the path. So it will ensure only one path. So switch 2 से switch on जाने का क्या path in my this scenario. So switch 2 से switch on जाने के लिए path है. Switch 2 से switch on directly जा सकते हैं, directly. Or we can go switch 2 से switch 3, switch 2 से switch 3, then switch on. This is also another path. This is path 1, direct path. This is path 2. So switch 2 से switch on जाने के लिए switch on is the root. दो path. Any of this path it will block, and it will ensure only one path to root from any of the switches. So switch 2 say only one path ensure that. Any of these two paths, one will be blocked. So that is the working of the STP. So you understand? यहाँ पे क्या क्या टर्मिनोलॉजी मैंने बोला? रूट ब्रिज. कोई भी एक स्विच को रूट बनाएगा, दैट्स कॉल्ड रूट ब्रिज, और बाकी सब नॉन रूट है. ओके, नॉन रूट ब्रिजेस. नाउ many other point is there. Many other point is there. Understand? Many other point is there. So let's have a connections. Let's have network topology like switch on. Oh, sorry, switch on, switch 2, switch 3. switch 3 एक टोपोलॉजी है, उसके साथ और एक स्विच कनेक्टेड है. switch 2 there is another switch 4. ये जो रूट वाला, लेट्स से दिस इज अ रूट ब्रिज of this topology.
रूट ब्रिज इसको स्विच ऑन को बना दिया. फाइन. नाउ the port which connected to switch on that port, so switch 2 का ये वाला पोर्ट और स्विच 3 का ये वाला पोर्ट रूट के साथ कनेक्टेड है. ऐसे ही स्विच 4 का ये वाला पोर्ट से रूट के साथ जा रहे हैं, रूट में पास जा रहे हैं. दिस पोर्ट कॉल्ड रूट पोर्ट. रूट पोर्ट स्विच 4 का ये वाला है रूट. लेट्स से स्विच 3 के साथ और एक भी पोर्ट है, ये वाला पोर्ट. ये वाला रूट पोर्ट नहीं है. जो रूट में जा रहा है दैट इज ओनली रूट पोर्ट. ये वाला स्विच 2 का ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू रूट. दिस इज गोइंग टू रूट. दिस इज गोइंग टू होम. स्विच 3 में जा रहा है. लाइक स्विच 4 का एक ही पोर्ट है. लेट्स से दिस इज अ पोर्ट. सो एक ही पोर्ट से हम स्विच 1 में जा सकते हैं. सो दिस वन इज द रूट पोर्ट. Okay. Now, root port is that port which lead to root. कोई भी स्विच का रूट पोर्ट वही पोर्ट होता है जो लीड टू रूट. स्विच ऑन इज इटसेल्फ ए रूट ब्रिज. तो उसका जो दो पोर्ट है इट्स नॉट ए रूट पोर्ट. स्विच ऑन इटसेल्फ ए रूट, तो उसका जो दो पोर्ट है वो रूट नहीं माना जाएगा. रूट माना जाएगा दूसरा स्विच का पोर्ट को जो रूट में जा रहा है. नॉन रूट स्विचेस का पोर्ट को रूट पोर्ट कहा जाता है. बट नॉट ऑल पोर्ट, ओनली दैट पोर्ट विच लीड टू स्विच. नॉन रूट का ओनली दैट पोर्ट which lead to switch is called root port. Okay. Now, सर बोलो. सर स्विच 4 से स्विच 2 जो पाथ जा रहा है उसको रूट पोर्ट कैसे बोल रहे हैं फिर? क्योंकि स्विच 4 से स्विच 1 में जाने के लिए, रूट में जाने के लिए एक ही पोर्ट है. दैट इज ओनली रूट पोर्ट ऑफ द स्विच पोर्ट. हर एक नॉन रूट स्विचेस का एक पोर्ट को रूट पोर्ट माना जाएगा. तो स्विच 4 इज आल्सो नॉन रूट स्विचेस. तो उसका कौन सा को तुम रूट पोर्ट बोलो? जो रूट में जा रहा है. द पोर्ट विच लीड टू रूट. तो स्विच 4 का एक ही पोर्ट है लेट्स से, और एक ही पोर्ट से स्विच 4 से स्विच 2, देन स्विच 2 से स्विच ऑन. एक ही पोर्ट से हम रूट पोर्ट में जा सकते हैं, रूट ब्रिज में जा सकते हैं. और स्विच 4 से स्विच 2 जा, स्विच 3 गया, फिर स्विच ऑन गया. बट विच पोर्ट इज लीडिंग टू रूट? दिस पोर्ट. लेट्स से दिस इज A. So A port, A is the root port for the switch port. स्विच 2 का जो स्विच ऑन में जा रहा है, रूट में जा रहा है, दैट इज रूट पोर्ट. सो स्विच 2 का स्विच ऑन में जा रहा है ये वाला. कोई भी एक माना जाएगा रूट एज ए रूट. स्विच 2 का अगर ये भी एक पाथ है, ये भी एक पोर्ट है, बट दोनों के बीच एक ही माना जाएगा रूट पोर्ट. अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है रूट के साथ तो वही रूट पोर्ट है. अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो एल्गोरिदम डिसाइड करता है, एसटीपी एल्गोरिदम डिसाइड करता है कौन सा रूट पोर्ट है. बट जस्ट अंडरस्टैंड रूट पोर्ट इज दैट पोर्ट व्हिच लीड टू रूट. नॉन रूट का ओनली दैट पोर्ट व्हिच लीड टू रूट स्विच, दैट इज कॉल्ड रूट पोर्ट. ओके. यस. हाँ बोलो. यस सर. हाँ यस सर. ओके. okay. Now we have
another terminology. We have, in this connection, we have another terminology. So root port you understand. Now there is another port called designated port. Designated port. The port which capable, the port which capable for sending and receiving data, for sending and receiving data, sending and receiving data, that is a designated port. So in this connection, let's say स्विच ऑन के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये पोर्ट, स्विच ऑन का ये पोर्ट, इट्स अ डेजिग्नेटेड पोर्ट. रूट ब्रिज के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, मतलब रूट ब्रिज का जो जो पोर्ट होता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट अ डेजिग्नेटेड पोर्ट. दैट इज बाय डिफॉल्ट अ डेजिग्नेटेड पोर्ट. रूट पोर्ट, ये जो स्विच 2 का जो रूट पोर्ट है, ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है. दिस इज आल्सो डेजिग्नेटेड पोर्ट because this is also capable to sending and receiving data. This is also switch to का ये जो port है, this is also root port as well as designated port, as well as designated port. So designated port is simply that one which capable of sending and receiving data. But some means, suppose this port is disable, this port is suppose blocked, this port is blocked. So this is not a designated port, because this is not capable of sending and receiving data. This is not designated. जो ब्लॉक पोर्ट होता है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं होता है. सो व्हिच वन इज द ब्लॉक पोर्ट, जिसमें डेटा सेंड एंड रिसीव नहीं हो सकते, वो वाला है ब्लॉक पोर्ट. ब्लॉक पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट कभी भी डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं हो सकता है. सो डेजिग्नेटेड पोर्ट शुड बी सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा. एंड ब्लॉक पोर्ट क्या होता है, जो सेंड और रिसीव नहीं कर सकता है, सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकता है, कैन नॉट, इज नॉट कैपेबल, दैट इज अ ब्लॉक पोर्ट. अंडरस्टैंड? सर जो स्विच 4 से स्विच 2 जा रहा है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं है क्या? स्विच पोर्ट से स्विच 4 से स्विच 2, हाँ ये भी स्विच डेजिग्नेटेड 2 पोर्ट है. हाँ ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है. इफ इट इज सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा, देन दैट इज आल्सो डेजिग्नेटेड पोर्ट. A root port can be designated port if it's capable of sending and also receiving the data. But there could be some port which is only receive the data but not capable of sending the data. Then that is not a designated port. If it is capable both, then only designated port. Understand? Is it clear? These are yes the sir. terminologies. Nothing need to worry. These are the terminologies. Just understand the terminologies. Okay. Now, acha. Now, very important concept. So, designated port, you have blocked port, you Excuse me, have sir. root. हाँ बोलो. सर जो पोर्ट ब्लॉक्ड है वो भी डेजिग्नेटेड में रहेगा ना सर? नहीं, क्यों? जो ब्लॉक्ड है, it's not capable of sending and receiving data. Okay, got it, sir. The port which is capable of sending and receiving data, that is only designated port. जो port block कर दिया, let's say this is a block, so it's not capable of sending or receiving. कोई भी अगर एक वायलेट होगा, that is not a designated. सोच लो कोई भी पोर्ट सेंडिंग कर पा रहा है, बट रिसीविंग नहीं कर पा रहा है. This is not a designated port. This is not designated port. कोई Got it, sir. रिसीव कर पा रहा है बट सेंडिंग नहीं कर पा रहा है.
कोई भी port. That is also not a designated port. So designated port should be capable of both sending, receiving. Then I can say this is a designated. Understand? Yes, sir. Understand? Okay. Now the very important concept: how the root bridge is selected. ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिस्को पैकेट ट्रांसफर में सिलेक्ट होगा बाय द एसटीपी प्रोटोकॉल. एसटीपी प्रोटोकॉल इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड. तो कैसे सिलेक्ट होगा, दैट इज आवर मेन थिंग. थियोरिटिकली अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे कुछ, बट थियोरिटिकली फर्स्ट अंडरस्टैंड. तो ये कनेक्शन मैंने लिया था. द कनेक्शन इज, मैंने सॉरी मैंने स्विच लिया था. दिस इज स्विच ऑन, this is switch 2, this is switch 3. Now any of this is becoming root bridge. Suppose this one is the root bridge, but how it is selected as a root bridge? कोई भी को ऐसे randomly root bridge बना देगा? No. STP protocol का एक principle होता है. How they selected the root bridge? There is a theoretical concept on that. Let's understand that. ये जो switches है, ये जो स्विचेस है, हर एक स्विच का एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है? एसटीपी प्रोटोकॉल हर एक स्विच में एक ब्रिज आईडी असाइन करता है. ब्रिज आईडी. तो इसका एक ब्रिज आईडी देगा 5, इसका एक ब्रिज आईडी देगा 6, 7. आई विल टेल यू व्हाट इज द ब्रिज आईडी. सर ये स्विच है या ये सर ये स्विच है या ब्रिज है, या इसका नाम बस ये स्विच ही है, बट द टर्मिनोलॉजी एज ए ब्रिज. ओके ओके. डोंट एक्चुअली कंफ्यूज्ड. ब्रिज बोलकर जो हमारा डिवाइस है उससे ये टर्मिनोलॉजी आया है. सो दिस टर्मिनोलॉजी वर्किंग फॉर द स्विचेस as well as the bridges as well as the router. So if someone is talking about root bridge, वो स्विच में हो वो ब्रिज में हो, that is the same thing जो root है. The terminology actually come from the bridge devices, but it's applicable to switches as well as the router. Understand? Yes sir. So don't confused. मैं switch का बात ही कर रहा हूँ, but the terminology will as bridge, root bridge, bridge ID, ऐसा ही है terminology. So don't be confused. I am talking about the switches only. Okay? So STP प्रोटोकॉल हर एक स्विच में एक ब्रिज आईडी असाइन करता है. ब्रिज आईडी असाइन करता है. हर एक स्विच में एक ब्रिज आईडी देगा. I will talk about what is the bridge ID and how it will assign. First understand, हर एक स्विच का एक ब्रिज आईडी रहेगा. कोई भी एक नेटवर्क में मैं नेटवर्क को बना लिया. लेट्स से दिस इज माय नेटवर्क, स्विच 1 टू स्विच 2, स्विच 2 स्विच 3, स्विच 3 टू स्विच 1 again. So this is the connection. In this connection, STP protocol assign bridge ID to every switches. जिस स्विच का ब्रिज आईडी लोएस्ट होगा, ब्रिज आईडी जिस स्विच का लोएस्ट होगा, लोएस्ट ब्रिज आईडी स्विचेस, ब्रिज आईडी लोएस्ट स्विच become root bridge. Again repeating, I will talk about the bridge ID कैसे असाइन होता है और bridge ID क्या है वो बाद में बात कर रहा हूँ. बट आप भी समझो रूट ब्रिज कौन होता है. STP protocol assign bridge ID to every switches. जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम होगा वही रूट ब्रिज होगा. ओके? जिसका सबसे कम होगा, अंडरस्टैंड, लोएस्ट
The bridge ID, which is the lowest, that is the root bridge. Now, what is this bridge ID? What is this bridge ID? तो ये जो ब्रिज आईडी असाइन हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है ना क्रोनोलॉजी में होगा? STP दे रहा है, that is using some formula to calculate the bridge ID. STP in behind, जब तुमने नेटवर्क established बनाया, STP behind में काम कर रहा है और वो एक फॉर्मूला के बेसिस ब्रिज आईडी असाइन कर रहा है. So that formula I will talk about now. How this bridge ID is actually calculated in STP. Okay. ओके सर. ब्रिज आईडी का फॉर्मूला है, कोई भी स्विच में जो ब्रिज आईडी असाइन होता है उसका फॉर्मूला है 48 बिट MAC address of that switch, MAC address of that switch, and some priority value, priority. It's a 4-bit number. So let's understand. Bridge ID is a calculation of 48-bit MAC address plus a priority value. I'll talk about what is this priority value. You know already what is MAC address. हर एक स्विच का और हर एक नेटवर्क डिवाइस, हर एक कंप्यूटर का एक MAC address. The MAC address is 48 bit. So it's look like 4C, 4B, 4As, like that. You can see in your computer. It should also have a MAC address. So that MAC address of that device plus some priorities. If that one is calculated, some value gone. Let's have an example. Let's have an example to understand this. Now in my connection, switch on, switch to, and switch 3. This is my standard connections to understand STP. तो सोच लो स्विच ऑन का कुछ मैक एड्रेस है, लेट्स से A, B, B, C, C, D, D. स्विच 3 का कुछ मैक एड्रेस है, XX, YY, ZZ, PP. इसका कुछ मैक एड्रेस है, E, FF, DD, XX, whatever. इसका कुछ मैक एड्रेस है, इसका कुछ मैक एड्रेस है, इसका कुछ मैक एड्रेस है. स्विच का हर एक स्विच का एक प्रायोरिटी वैल्यू होता है. प्रायोरिटी वैल्यू यू कैन सेट प्रायोरिटी वैल्यू. प्रायोरिटी वैल्यू का रेंज होता है, इट्स अ 4-bit numbers, 4-bit. So it's 0 to something. What is the 4-bit से कितना नंबर हम जनरेट कर सकते हैं? इंटीजर का 4-bit होता है. What is the range of the integer? Tell me. इंटीजर का रेंज क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में या जावा में? क्या बोलो? क्या रेंज होता है? देखना पड़ेगा सर यार. And that, so it's something. So 4-bit अगर है तो उस 4-bit से how many? 3, 2, 7, 6, 8. सर -2147 483 ऐसा ओके तो 2. हाँ बोलो. सर -2147. हाँ सर बाइट में ना? 4-bit. ओ बीट में.
ओके। हाँ सर, -2147 हाँ 483 6482। अच्छा जो भी है forget about that. This priority value actually range from 0 to 32768. This is the range. तो कोई भी डिवाइस का एक प्रायोरिटी वैल्यू होता है जो इस वैल्यू के अंदर होगा. यू कैन सेट द प्रायोरिटी वैल्यू सेट कर सकते हो. सो हर एक डिवाइस का एक प्रायोरिटी वैल्यू होता है. बाय डिफॉल्ट अगर कोई प्रायोरिटी वैल्यू सेट नहीं है, यूजर ने कोई प्रायोरिटी वैल्यू सेट नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच का प्रायोरिटी वैल्यू होता है 32768. हर एक स्विच का प्रायोरिटी वैल्यू होता है 32768. इट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू. जब भी कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है तब ये प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट होते रहता है 32768 बाय डिफॉल्ट रहता है. You can change this priority value. You can set priority value in a switch by some command that I'll show later. But by default switch अगर कॉन्फ़िगर हो गया, स्विच कनेक्टेड किया, एक नेटवर्क फॉर्म किया, by default 32768 is your priority value. Okay. Now understand this bridge ID. I said bridge ID is a sum of MAC address plus priority. तो स्विच ऑन का ब्रिज आईडी क्या होगा? स्विच ऑन का ब्रिज आईडी क्या होगा? स्विच ऑन का ब्रिज आईडी होगा 32768 प्लस मैक एड्रेस. मैक एड्रेस का लेट्स से सम वैल्यू आएगा. इसको अगर तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, सम वैल्यू विल कम. लेट्स से 100 वैल्यू आया. ये अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, सम वैल्यू विल कम 110. इसका कुछ आया लेट्स से, इसका भी आया लेट्स से 150. तो इसका ब्रिज आईडी क्या होगा? 32768 प्लस 100. इसका ब्रिज आईडी क्या होगा? 32768 प्लस 150. इसका स्विच 3 का क्या होगा? 32768 प्लस 110. जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम आया, ये वाला, दैट बिकम द रोड ब्रिज. सारे का प्रायोरिटी वैल्यू सेम है बाय डिफॉल्ट. प्रायोरिटी वैल्यू यू कैन चेंज, दैट इज द लेटर पार्ट. बट जब स्विच कॉन्फ़िगर होता है, सारे का प्रायोरिटी वैल्यू सेम होता है. उस केस में ट्राई ब्रेकर कौन होता है? मैक एड्रेस. जिसका मैक एड्रेस का वैल्यू सबसे कम होगा, दैट इज बिकम योर रूट ब्रिज. दिस इज डन बाय द एसटीपी. एसटीपी का एल्गोरिदम. एसटीपी बैकग्राउंड में चल रहा है, एसटीपी एल्गोरिदम, और ये काम होता है. हर एक का ब्रिज आईडी कैलकुलेट होता है. हाउ? They calculate the bridge ID using the MAC address plus the priority value. Priority value by default same रहता है सबका, that is 32768. ट्राईबेकर इन दिस केस, जिस स्विच का MAC एड्रेस सबसे कम होगा वही रोड ब्रिज माना जाएगा. बट यू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रायोरिटी वैल्यू अगर किसी का मैं चेंज कर दूंगा, लेट्स से स्विच 2 का मैं प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर दिया. स्विच 2 का प्रायोरिटी वैल्यू मैंने चेंज करके कर दिया 4096 कर दिया लेट्स से, एंड उसका 150 है मैक एड्रेस वैल्यू. डेसिमल में करोगे तो समथिंग सम वैल्यू विल कम. दैट वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट.
Let's assume that value is 150. So इसका है 4096 plus 150 ब्रिज आईडी. स्विच टू का ब्रिज आईडी ऐसा है. नाउ स्विच 1 का प्रायोरिटी वैल्यू सेम ही है. लेट्स से 32768 प्लस मैक एड्रेस वैल्यू इज 100 स्विच 1 का. स्विच 3 का प्रायोरिटी वैल्यू सेम है 32768 plus MAC address is 110. So 110 MAC address ka value. So in this case, who will be the bridge ID? Root bridge. In this case, so this is switch on ka bridge ID. This is switch 2 ka bridge ID. This is switch 3 ka bridge ID. In this case, STP किसको root bridge बनाएगा? Tell me. कोई है आंसर देने के लिए? Is there anyone to answer? कोई है सुन रहा है लेक्चर? सर दोबारा बोलिए ना, क्या क्या वेरिएबल सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक और सर सुन रहे हैं सर, थोड़ा एक और बोल दीजिए, क्या बोल रहे हो ऊपर नीचे मतलब. Okay, let's say again. So I have three switches. Switches 1, switches 2, switches 3. They are connected. STP is working here. STP बोल रहा है जिसका ब्रिज आईडी लोएस्ट होगा वो वाला रोड ब्रिज होगा. रोड ब्रिज जिसका ब्रिज आईडी लोएस्ट होगा वो वाला होगा रोड ब्रिज. सो हाउ द ब्रिज आईडी कैलकुलेट? ब्रिज आईडी का फॉर्मूला है MAC address of that switches plus priority value. स्विच 1 का प्रायोरिटी वैल्यू 3276 है. हर एक का प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेम ही रहता है. अगर तुम प्रायोरिटी वैल्यू चेंज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट सबका 32768 ही रहता है. When you configure a network, by default priority value is 32768. In that case, MAC address सबका तो सेम है प्रायोरिटी वैल्यू. तो MAC address जिसका लो होगा, जिसका सबसे लोएस्ट होगा, वही ब्रिज आईडी उसका सबसे लोएस्ट होगा. सो लेट्स से स्विच ऑन का MAC एड्रेस है AA BB CC DD, जिसका वैल्यू अगर ये बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो लेट्स से सम वैल्यू इज कमिंग 100. स्विच 2 का भी एक मैक एड्रेस है. इसका मैक एड्रेस है लेट्स से XX YY ZZ AA. इसका मैक एड्रेस है. स्विच 3 का मैक एड्रेस है PP QQ RR SS. लेट्स स्विच 2 का जो मैक एड्रेस है उसमें अगर डेसिबल में वो मैक एड्रेस का वैल्यू कन्वर्ट करोगे, लेट्स से द वैल्यू इज कमिंग 110. स्विच 3 का जो मैक एड्रेस है उसका वैल्यू अगर कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, लेट्स से द वैल्यू इज कमिंग 150. नाउ टेल मी हु विल बी द रूट ब्रिज है. रूट ब्रिज का फॉर्मूला है जो ब्रिज आईडी लोएस्ट. स्विच 1. व्हाई? मैक एड्रेस उसका लोएस्ट. प्रायोरिटी वैल्यू सारे का सेम है 32768. सो इफ यू ऐड ब्रिज आईडी, स्विच ऑन का ब्रिज आईडी क्या होगा? स्विच ऑन का ब्रिज आईडी होगा 32768, दैट इज प्रायोरिटी वैल्यू 32768 प्लस 100. प्रायोरिटी मैक एड्रेस क्या है? 100 है. डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 100 है. स्विच 2 का क्या होगा? ब्रिज आईडी PID क्या होगा? 32768 प्लस 110.
110 110 स्विच ट्रिगर क्या होगा 32768 ब्रिज आईडी of switch 3 32768 plus 150. Now tell me किसका ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट है देखो सारे में 32768 कॉमन है तो ये वन स्विच ऑन स्विच ऑन इज द रूट ब्रिज जिसका ब्रिज आईडी लोएस्ट है वही रूट ब्रिज कहा जाता है नाउ मैंने क्या क्वेश्चन किया था ये समझो अच्छे से प्रायोरिटी वैल्यू का रेंज होता है 0 to 32768 समथिंग मैंने बोला मैं स्विच 2 का प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ स्विच 2 का प्रायोरिटी वैल्यू आई एम चेंजिंग स्विच 2 का मैक एड्रेस का वैल्यू 110 है प्रायोरिटी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ यू कैन चेंज द प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 32768 रहता है 32768 बट यू कैन चेंज द प्रायोरिटी वैल्यू लेट्स से द प्रायोरिटी वैल्यू आई एम चेंजिंग 4096 दिस इज द प्रायोरिटी वैल्यू और ब्रिज मैक एड्रेस का वैल्यू 110 तो इसका ब्रिज आईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4096 प्लस 110 इन दिस केस लेट्स से सारे का प्रायोरिटी वैल्यू मैक एड्रेस सेम ही है अभी किसका ब्रिज आईडी सबसे कम होगा स्विच 2 then switch 2 will be your root bridge in this case this will be now root bridge जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम होता है वही रूट ब्रिज कहा जाता है सो यू कैन चेंज द रूट ब्रिज स्विच ऑन जो पहले था स्विच 2 बाद में हो गया बाय चेंजिंग द प्रायोरिटी वैल्यू सो बाय चेंजिंग द प्रायोरिटी वैल्यू आई कैन चेंज द रूट ब्रिज आल्सो इन अ नेटवर्क so how the root bridge is decided by the STP it calculate the bridge ID जिसका लोएस्ट आएगा वही रूट ब्रिज माना जाएगा मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी वैल्यू इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रिज आईडी ओके इज इट ओके यस सर Yes, sir. this is how the root bridge is decided now how the root bridge is actually decided understand now another terminology so so ब्रिज आईडी के ऊपर रूट ब्रिज डिसाइड होता है ब्रिज आईडी का फॉर्मूला है मैक एड्रेस कोई भी स्विच का ब्रिज आईडी अगर निकालना चाहते हो तो मैक एड्रेस प्लस उसका प्रायोरिटी वैल्यू okay that is how the bridge ID calculated now understand one terminology is called BPD bridge protocol data unit this is the message or this is the data this is the message sent to decide who is the bridge message sent to decide who is the root bridge BPDU bridge protocol data unit this is the message end of message that is sent between switches switch के between
सेंड होता है टू डिसाइड हु इज द रूट ब्रिज. अंडरस्टैंड दिस. Understand what is happening. Go back to my previous same connection. Switch on, switch 2, switch 3. जब ये कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हुआ, हर एक का ब्रिज आईडी कैलकुलेट हुआ. कनेक्शन होने के साथ साथ ब्रिज आईडी कैलकुलेट, ब्रिज आईडी कैलकुलेट हुआ. होने के साथ साथ ही सारे का ब्रिज आईडी स्विच टू सेंड इट्स ब्रिज आईडी टू स्विच ऑन. Switch on send the bridge ID to switch 3. Switch 3 send the bridge ID to switch 2. Like that way, they exchange their bridge ID using a message called BPDU. BPDU के साथ उन लोगों का ब्रिज आईडी शेयर होता है. स्विच के बीच ब्रिज आईडी शेयर होता है. ब्रिज आईडी शेयर. देन जिसका ब्रिज आईडी लोएस्ट है, तो स्विच ऑन के ब्रिज आईडी लेट्स कम समथिंग वैल्यू 32768 plus 100. Switch 3 का ब्रिज आईडी लेट्स से कम 32768 plus 150. इसका ब्रिज आईडी आया 32768 plus 110. Now they exchange their bridge ID among them. Switch to switch on को शेयर किया, switch 3 switch on switch 3 को शेयर किया, switch 3 switch 2 को शेयर किया. ऐसे करते करते उन लोगों को पता चल गया किसका ब्रिज आईडी लोएस्ट है. सो स्विच ऑन के पास जब BPDU आया स्विच 2 से एंड स्विच 3 से, वो देखा उसका खुद का ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट है. तो वो खुद का मेमोरी में लिख दिया रूट ब्रिज कौन है. तो रूट ब्रिज वो बोल दिया कि मैं खुद ही रूट ब्रिज हूँ. स्विच ऑन इज खुद ही रूट ब्रिज है. ऐसे BPDU मैसेज स्विच 3 के पास गया स्विच ऑन से, और स्विच 3 देखा उसका जो ब्रिज आईडी है वो स्विच ऑन का ब्रिज आईडी से ज्यादा है. तो वो अपने मेमोरी में अपडेट किया कि स्विच ऑन इज द रूट ब्रिज. ऐसे ही स्विच 2 के पास स्विच ऑन से एक BPDU मैसेज आया, स्विच 3 से एक BPDU मैसेज आया. सबका ब्रिज आईडी वो कंपेयर किया करके वो डिसाइड किया अपने मेमोरी में कि रूट ब्रिज है स्विच ऑन. तो सारे के पास इंफॉर्मेशन रहता है कौन रूट ब्रिज है. दैट इंफॉर्मेशन शुड बी विद ऑल द स्विचेस. सारे के पास मतलब बोलो. सारे के पास सारा का वो ब्रिज आईडी रहता है, और वो लोग मतलब जो लोअर रहता है उसको मान लेता है कि हाँ ये रूट ब्रिज है. हाँ, सारे का ब्रिज आईडी वो रहता है. मैक एड्रेस, सारे का मैक एड्रेस एंड प्रायोरिटी वैल्यू रहता है मेनली. तो ब्रिज आईडी प्लस मैक एड्रेस इज द मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी वैल्यू इज द ब्रिज आईडी. तो वो खुद कैलकुलेट करता है अंदर में करके, वो देखता है जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम है दैट इज रूट ब्रिज. तो सारे का मेमोरी में कौन रूट ब्रिज है उनका इंफॉर्मेशन रहता है, उसका मैक एड्रेस, उसका प्रायोरिटी वैल्यू सब कुछ रहता है. So that done by the BPD, Bridge Protocol Data Unit. Bridge Protocol Data Unit is required to share the data in between the switches and to decide who is the root bridge. BPDU required to decide who is the root bridge. That is shared between switches. Actually BPDU में क्या रहता है, सारे का मैक एड्रेस और प्रायोरिटी वैल्यू रहता है. ब्रिज आईडी एक्चुअली कैलकुलेट होके नहीं रहता है. ब्रिज आईडी वो लोग खुद कैलकुलेट करता है. रहता है एक्चुअली मैक एड्रेस और प्रायोरिटी वैल्यू. अगर मैक एड्रेस और प्रायोरिटी वैल्यू हर एक स्विच का मिल जाएगा तो ब्रिज आईडी तो कैलकुलेट हो जाएगा ना. दैट इज डन मतलब बिहाइंड में होता है. बट शेयर एक्चुअली होता है मैक एड्रेस and priority value of each of the switches. Understand?
ठीक है. Understand or not? Yes sir. ठीक. So BPDU is the bridge protocol data unit that is required to share the MAC address and priority value, and based on that, route bridge is decided. So you got many terminologies. Who is the route bridge? What is the bridge ID? What is BPDU? What is designated port? And also we have seen route port. Those things you have to remember. Now, अच्छा एक चीज ये जो एसटीपी काम होता है ना, एसटीपी का जो काम होता है, एसटीपी का जो काम होता है, ये वीलैन के ऊपर होता है. वीलैन. सो एक स्विच में अगर कोई वीलैन नहीं क्रिएट होता है, लेट्स से दिस इज अ स्विच, मैंने कोई वीलैन क्रिएट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट देयर इज अ वन वीलैन, डिफॉल्ट वीलैन, तो उसके ऊपर एक एसटीपी रन करेगा. नाउ इट्स assume you have created two VLAN in this switch. तो VLAN 1, VLAN 10, VLAN 12, 20, let's say you created. तो इसके लिए तुम एक अलग एसटीपी रन कर सकते हो, इसके लिए तुम अलग एसटीपी रन करेगा. सो इसके लिए एक अलग एसटीपी रन करेगा जिसका एक रूट ब्रिज होगा इस VLAN के लिए. इसके लिए एक अलग एसटीपी रन करेगा जिसके लिए एक अलग रूट ब्रिज होगा. हो सकता है. So STP is actually what? Per VLAN. It's a per VLAN protocol. STP. तो हम जब कोई VLAN create नहीं किया हो, by default there is a default one, VLAN 1 is there. That is the default VLAN. So it will work on that VLAN. But if you created a different VLAN into the switches, तब डिफरेंट VLAN के लिए डिफरेंट एसटीपी कैलकुलेट होगा, डिफरेंट रूट ब्रिज कैलकुलेट होगा, डिफरेंट डेजिग्नेटेड पोर्ट कैलकुलेट होगा. दैट इज डिफरेंट. सो एसटीपी वर्क पर VLAN. कॉन्सेप्ट इज सेम. हर एक VLAN के लिए कॉन्सेप्ट इज सेम. कोई एक रूट ब्रिज बनेगा जिसका ब्रिज आईडी कम है, कोई एक नॉन रूट ब्रिज बनेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, कोई भी लिंक ब्लॉक होगा. दैट इज based on per VLAN. Okay, so it will be clear when I'll show you it practically. मैंने अभी तक प्रैक्टिकली कुछ दिखाया नहीं, मैं थियोरेटिकली अभी तक जा रहा हूँ, बट दिस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली. ओके, कोई क्वेश्चन है अभी तक? Any question? The last thing that you said, that each of these, I think the bridge IDs would be decided per VLAN, right? Per VLAN. Okay, so like for one VLAN, the whole bridge ID is like the system is different, and for another VLAN, the maybe some other thing would be the blocked route or something like that. So spanning trees would be different in different VLANs, right? Spanning tree protocol algorithm is same. But the trees which would be formed, like the links which are blocked, they can be different in different VLANs. Yes, that could be different. Let's say there is an example. Switch on, switch to, switch to. तीनों में दो VLAN शेयर हुआ है, VLAN 10 and VLAN 20, जो तीनों के पास है. VLAN 10, VLAN 20, तीनों के पास है. Now it could be possible जब मैं VLAN 10 का बात कर रहा हूँ, तब switch 2 is the root bridge. VLAN 10 का बात कर रहा हो तो switch 2 could be the root bridge, and some of the link can be A links which the block. Similar way,
जब मैं स्विच VLAN 20 का बात कर रहा हूँ, लेट्स से इन दिस केस स्विच 1 इज द रूट, VLAN 20 का जब बात कर रहा हूँ, इट कुड बी पॉसिबल डिफरेंट VLAN के लिए डिफरेंट रूट भी छोड़ सकता है, डिफरेंट लिंक ब्लॉक हो सकता है, मतलब डिफरेंट स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर सकता है, इट कुड बी पॉसिबल. So the concept is same, algorithm is working principle is same, but the root bridge and the blocking link could be changed. Per so STP spanning tree, what is forming? It may depend on the VLAN to VLAN. So as I said earlier, at the very beginning of this class, these STP, VTP, these are the VLAN protocol. So it work on basis of a VLAN. और एक टर्मिनोलॉजी बोल देता हूँ. सुनो, एक चीज मैं बता देता हूँ, आज मैं जितना भी चीज बोल रहा हूँ ये रिवाइज कर लेना कल के क्लास में, कल के क्लास के लिए, अदरवाइज मेजर प्रैक्टिस. हाँ बोलो सर. वो जो एग्जांपल दिए थोड़ा पिछला थोड़ा बता दीजिए ना एक और बार दोबारा. हाँ कौन सा एग्जांपल बोलो. सर वो सवाल नहीं पूछा सर कि डिफरेंट VLAN के लिए अलग स्पैनिंग ट्री होगा, तो उसके बाद एक आप एक डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट किए, थोड़ा वो दोबारा बोल दीजिए, थोड़ा नेटवर्क हाँ मैं बोल रहा हूँ कि स्विच स्विच ऑन, जो मैं तब से बोल रहा हूँ कि स्विच ऑन, स्विच टू, स्विच थ्री, ये मेरा जनरल एक फिगर है जो मैं एसटीपी डिफाइन, एसटीपी लेक्चर देने के लिए यही फिगर तब से मैं बोल जा रहा हूँ. स्विच ऑन, स्विच टू, स्विच थ्री कनेक्टेड. ओके, लेट्स से स्विच ऑन में तुमने दो VLAN क्रिएट किया, VLAN 10, VLAN 20, और वो VLAN इंफॉर्मेशन यूजिंग BTP यू शेयर टू स्विच टू आल्सो, जो क्लाइंट है यू शेयर टू VLAN स्विच 2 में भी शेयर किया, स्विच 3 में भी वही VLAN इंफॉर्मेशन शेयर. अंडरस्टैंड? तीनों में सेम VLAN इंफॉर्मेशन शेयर. यस सर. नाउ VLAN 10 के लिए, VLAN 10 के लिए एक नेटवर्क काम करेगा, VLAN 20 के लिए एक नेटवर्क काम करेगा, राइट? VLAN 10 के लिए लेट्स से स्विच ऑन में और भी डिवाइस है, और भी डिवाइस है, और भी कंप्यूटर कनेक्टेड है. स्विच 2 में सम कंप्यूटर कनेक्टेड है, स्विच 2 में सम कंप्यूटर कनेक्टेड है, स्विच 3 में भी सम कंप्यूटर कनेक्टेड है. ओके, नाउ लेट्स से ये ए बी सी, ये डी ई एफ, ए जी एच आई, ये सब कंप्यूटर कनेक्टेड है. नाउ VLAN 10, VLAN 20 तीनों में है. नाउ लेट्स से VLAN 10 के अंदर है कंप्यूटर ए, बी, कंप्यूटर ई, कंप्यूटर एफ एंड कंप्यूटर जी. VLAN 20 के अंदर है कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी एंड कंप्यूटर एच है. तो ये दो कंप्यूटर, फिर ये दो कंप्यूटर और जी, और ये कंप्यूटर VLAN 10 के अंदर है, राइट? VLAN 10 के अंदर है.
नाउ VLAN 10 के लिए ये हो सकता है, अंडरस्टैंड दिस, VLAN 10 के लिए ये हो सकता है इस नेटवर्क कनेक्शन में जो जो डिवाइस है उसके साथ स्विच भी है, दिस स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, ये स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 के बीच एक रूट ब्रिज, लेट्स से VLAN 10 के लिए रूट ब्रिज है स्विच 3, VLAN 20 जो C D और HI ये जो डिवाइसेस है VLAN 20 में, ये सारे स्विच के साथ भी कनेक्टेड है, तो उस कनेक्शन में लेट्स से स्विच 2 इज द रूट ब्रिज. So that's my point. VLAN to VLAN root bridge can be changed for the same switches. VLAN 10 के लिए root bridge हो रहा है switch 3. VLAN 20 के लिए root bridge can be switch 2. It can be. It should be. I'm not saying it can be. There could be some possibility that switch 2 can be root bridge. VLAN 20 के लिए it could be that switch 1 भी also can be root bridge. So VLAN to VLAN switch का जो root bridge होता है वो डिपेंड कर सकता है, तो उसमें VLAN 10 के लिए let's say some this link is blocked और ये ब्लॉक करके एक स्पैनिंग ट्री फॉर्म हुआ, ऐसे ही VLAN 20 के लिए let's say this link is blocked, ये ब्लॉक है बट ये चल रहा है VLAN 20 के लिए. So in that case there is some spanning tree will be formed. So the spanning tree could be different in this case. Spanning tree per VLAN, spanning tree per VLAN could be different. So VLAN to VLAN root bridge could be different and spanning tree उसके वजह से जो spanning tree form होगा that could be different. That is my point. Working principle of the VLAN will be same. Working principle of the VLAN will be same. कि जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम है वही रूट ब्रिज माना जाएगा. But VLAN to VLAN root bridge can be different. VLAN 10 के लिए तुम किसी का प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो, VLAN 20 के लिए तुम किसी का प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो. So VLAN to VLAN priority can be changed. So VLAN to VLAN root bridge can be changed. क्योंकि रूट ब्रिज डिपेंड करता है प्रायोरिटी वैल्यू एंड मैक एड्रेस के ऊपर. अगर मैक एड्रेस तो चेंज नहीं होगा VLAN टू VLAN, एक स्विच का मैक एड्रेस सारे VLAN के लिए सेम होगा, बट प्रायोरिटी वैल्यू दैट इज अ लॉजिकल वैल्यू यू कैन चेंज दैट. सो बेस्ड ऑन दैट VLAN टू VLAN प्रायोरिटी वैल्यू अगर तुम चेंज कर सकते हो तो रूट ब्रिज कैन बी ऑल्सो चेंज. सो बेस्ड ऑन दैट रूट ब्रिज जो स्पैनिंग ट्री क्रिएट होगा, कुछ लिंक को ब्लॉक करके जो स्पैनिंग ट्री क्रिएट होगा, दैट कैन बी ऑल्सो डिफरेंट. ओके, यस सर. हाउ द सो मैं और एक चीज दिखाते हैं. लेट्स से दिस इज स्विच ऑन, switch 2. Let's say they are connected. Now VLAN 10 के लिए ये वाला स्विच है रूट ब्रिज. और सोच लो ये वाला लिंक डिसेबल है और ब्लॉक है, तो जो स्पैनिंग ट्री बनेगा, कैसे स्पैनिंग ट्री बनेगा, स्विच 2. जो स्पैनिंग ट्री बनेगा लॉजिकली मैं बना रहा हूं, ये नहीं हो रहा है, ये लॉजिकली बन रहा है. ये जो क्रिएट हुआ, ये स्पैनिंग ट्री क्रिएट हुआ, इसको रूट ब्रिज बना के इसको लिंक को ब्लॉक कर दिया, ये स्पैनिंग ट्री क्रिएट हुआ.
रूट ब्रिज के साथ जो पोर्ट रहता है वो कभी ब्लॉक नहीं कर सकते हो तुम. रूट ब्रिज के साथ जो पोर्ट होता है, यू कैन नॉट ब्लॉक दैट पोर्ट. सो any other port you can block. So let's say this port is blocked. If this one is blocked, this is the spanning tree. Now for VLAN 20, let's say VLAN 20, there is a scenario switch on. Same connection के लिए VLAN 20 में let's say switch 3. Let's say this one is the root bridge. This one is the root bridge. This one is the root bridge. So these two you cannot block. So this is suppose blocked. This is suppose blocked. How the spanning tree will look like now? Switch on, switch 2, switch 3. This is how the spanning tree will look. So the spanning tree per VLAN, ये एक VLAN के लिए spanning tree ऐसा बना और एक VLAN 20 के लिए spanning tree ऐसे बना. So per VLAN the spanning tree could be different. That's my point. Now understand?